Hello, my dear students. I hope you all are okay. Today, we all are starting a new topic of typography from part B, that is manuscript. Now, first of all, we must know that what is a manuscript. It's any document. It can be handwritten, it can be typed, it can be half written. Got it? In any form it can be. It may be a book, it may be an email, any letter, any project, any minute to minutes regarding any meeting, any agreement. Means to say any written matter that can be typewritten or that can be handwritten. That written matter which needs some correction before sending that for the publishing. Getting means suppose मैंने एक book लिखी है and to publisher I have to send. Before final publishing, what corrections are to be done in that particular matter? That is called manuscript. I think it's clear now. These documents are considered as draft or you can say rough scripts. अगर वो publish जाते हैं तो they become the final scripts. Okay, before publishing, which needs correction, that is called rough script. These drafts require में addition, deletion, any alteration, any type of modification. हो सकता है मुझे कोई वर्ड अच्छा ना लग रहा, उसकी जगह कोई नया वर्ड चेंज कर दूं. Any sentences to be deleted or any sentences to be added. Any type of correction can be done before publishing. The drafts are read again and again and the requisite proof correction signs are put to make correction in the margins of the document. Means when the document is with us for before publishing, at that time certain corrections if required, then we always do them, and particular symbols are there for particular corrections. Those symbols are called proof correction signs. Means what we today learn, we will learn basically the correction symbols to be done in the manuscript. Means in the written material that may be typewritten or that may be handwritten. Before publishing, how the corrections are to be done and which symbols are to be used for a specific correction, that we are going to learn today. Okay, chaliye. Here proof correction symbols means those symbols which we use for correction in the manuscript, they are called proof correction symbols. Now here 4 columns I have created. First is showing your symbols, second is showing the meaning of those symbols, then third is showing where these symbols are to be used before correction and after correction what will be the changes. Got it? Chaliye. Here first symbol is caps, means somewhere instead of any small letter capital letters are required. Okay, like here we can see, here is a sentence, the meeting ended with a vote of thanks to chair. Here chair means boss. So C of this chair word that must be in capital letters. So we will put a cross on C, it means C is to be changed. और इस लाइन के फ्रंट में बिल्कुल जहाँ पर भी ये जिस पेज पे ये रिटर्न होगा, इन द एक्सट्रीम लेफ्ट मार्जिन वी विल राइट कैप्स. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो लेटर हमने क्रॉस किया है इंस्टेड ऑफ दैट दिस करेक्शन इज रिक्वायर्ड. गॉट इट? एंड इफ publisher got it right, then after correction it will look like this. Next is हैश बोलते हैं वैसे हम इसे, बट इट्स इन मैन्यूस्क्रिप्ट इट्स अ सिंबल फॉर स्पेस. सपोज हेयर अ सेंटेंस इज रिटन एंड हेयर वोट ऑफ थैंक्स, वोट के बाद और ऑफ के बाद देयर 2 spaces must be there. Okay, for that we will cross where you want the space, 2 cross we have put, and at the front of this line this symbol will be put. It means wherever the cross is there, their space must be inserted, and after correction it will look like this. Then third symbol is equalizing space. It look like this. Space का symbol तो same है, उसके आगे EQ add हो जाएगा, that is equalize. Okay, means here you can see somewhere the more space is
visible, somewhere very less space is required. We can see here. Then at the both spaces we will put cross. ये cross थोड़ा इधर लग गया, ये इधर off के बाद लगना था. At both places we will put cross, and at the front of this line we will draw this symbol equalizing space. It means at both spaces it will be equalized, and after correction it will look like this. Done. Then next symbol is LC or SC, means lower case or smaller case. जो भी ज़्यादा हमें convenient लगता है, that symbol we can use. It means somewhere any letter needs to be capitalized, somewhere any letter needs to be in smaller case. Like here for capitalizing we have used this. Here any of these symbol will be used for writing any letter in smaller case. Like here we can see the committee members का M cross किया हुआ है. Why? Because this M needs to be written in smaller case. And here seniority, here S, this needs to be written in smaller case too. So it means both the letters we can cross or we can underline. दोनों में से कोई भी एक चीज़, एक manuscript में you can follow any one method. Either you will use cross or you will use underline. ठीक है, या तो क्रॉस कर देंगे या अंडरलाइन करेंगे, जो भी करेक्शन हमें करनी है. एंड एट द फ्रंट ऑफ दैट पैराग्राफ और दैट लाइन, दैट सेंटेंस, वी विल ड्रॉ दैट पर्टिकुलर सिंबल. ओके, इट मीन्स मेंबर्स का M और सीनियरिटी का S, दैट विल बी रिटन इन स्मॉलर केस. नेक्स्ट सिंबल इज NP. इंस्टेड ऑफ NP वी कैन यूज डबल स्लैश ऑल्सो. इट मीन्स न्यू पैराग्राफ. समटाइम्स ऐसा होता है ना, बहुत सारे sentences continuously we used to write in same paragraph, but somewhere we feel that next paragraph is to be created. In that case we will use double slash. Like here is a long text is written. From here necessary के बाद it seems that a new paragraph is to be started. For that we can put double slash here, or we can put double slash here also. Here also and or here, wherever you want, it's convenient to you. Double slash we will put. It means from here new paragraph is to be started. As you can see, after correction the new paragraph is starting from here. Got it? Next is this symbol looks like 3. Sorry, this symbol looks like 3. It can be in any direction. इसे नीचे की साइड फेसिंग भी हो सकता है, अपर फेसिंग भी हो सकता है. बेसिकली द सिंबल इज रन ऑन, मीन्स कॉन्टिन्यूएशन. एक सिंपल सेंस इसकी है कॉन्टिन्यूएशन. लाइक हेयर मीन्स सपोज वी हैव क्रिएटेड 2-3 पैराग्राफ्स, बट द मैटर इज ऑफ ओनली 1 पैराग्राफ. It means no need for any new paragraph. In continuation it should be done. Like here in example we have written 2 paragraphs we have done, but after reading we got to know that both are related to the same topic and no need for the new paragraph. So here a symbol of run on is drawn. It means no new paragraph required. This there can be started from here only. Okay, and if after correction it will be like this. Okay, then next is it's D, small d or capital D. Any of the D you can use. It means delete the matter. The heading of, here you can see the text is written. The heading of the letter should not be centralized. Here not word is not required, so we can cross through the word. Just cross through the word, means cut karo, and at the front of this sentence put D, any of the symbols, smaller d or the capital D, any D you can write here. Then after correction it will be like this. Next symbol is CTR, means centralize. If anything you want to be written in center, for that underline that sentence or that word. Suppose I want to put it in the center completely, so you can underline it. Here I forgot to underline it. You can underline it, and at the front of the same line we can write CTR, means the underlined text must be written in center. Okay, next is stat. Next symbol is stat. Stat means let it stand as it is, means जैसा है वैसा रहने दो. Okay, for
example here I have done. In this example, we can see that 2 or 3 corrections we have done. But later on we got to know that no correction is required. It was okay. So in this case, we can write in front of this sentence stat, means let it be as it is. No, not considering any of the correction. Is it clear? Here you can see we have done the correction, but in the final copy no correction is done. Means stat is considered, let it stand as it is. If by mistake we did any correction and that correction is not required to be done, in that case stat can be written in the starting. Got it? Next is in full. Next proof correction symbol is in full. It means in the full form instead of short form. Here you can see we have written 3rd August dash 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 and dash, means third के बाद में it may be possible any other date is there. So here it means in full form 3rd, 10th, 17th, means whatever is here. Means in manuscript no short form is to be written, always the complete form. For example, अगर doctor है तो that should not be written in doc dot. Okay, that will be considered as wrong here. Got it? Now next is trans. Simply हम इसे transpose भी कह देते हैं. Transpose. Okay, transpose the words. Here in this example we can see that a sentence is written, I believe the education is spreading undoubtedly, possibly in few a year. Obviously यहाँ पर क्या होगा? In a few years. It means a यहाँ की बजाय it must be here. तो देखो ट्रांसपोज सिंबल को ध्यान से देखें. The word which needs to be shifted उसे हमने अंडर हाफ सेमी सर्कल लिया. Then this line will go wherever it needs to be shifted. Got it? इस a को हाफ सेमी सर्कल में लिया हमने and it needs to be taken at the position where it is to be shifted. This is called transpose. Suppose इस a को मुझे यहाँ लाना होता तो it means इस हाफ सर्कल को लेके मैं इस लाइन को यहाँ ला के छोड़ देती. Got it? ज़रूरी नहीं है ये ट्रांसपोज ऐसे ही स्लांटिंग एस बने, ऐसा कुछ नहीं है. मीन्स टेकिंग विद इन यू कैन से सेमी सर्कल, एक हाफ सर्कल में लेंगे उस वर्ड को विच नीड्स टू बी शिफ्टेड and after that that will be carried on to the location wherever it is required. Suppose लास्ट में ले जाना है तो मैं लास्ट में ले जाके छोड़ दूँगी उसको. Got it? And it will be corrected. And in the starting अगर सिंबल ड्रॉ कर दिया तो it means it clear. और other method is in the starting we can write it trans or this symbol can be created. After that वही ट्रांसपोज है. One more example is given here. You can see एजुकेशन की स्पेलिंग मिस्टेक है. यू मस्ट बी बिफोर सी. यू को हमने हाफ सेमी सर्कल में लिया एंड देन दैट इज टेकन एट द लोकेशन वेयर एवर इट इज टू बी करेक्टेड. क्लियर? आफ्टर दैट ट्रांसपोज का एक और मेथड है यहाँ पर. लुक हियर. हियर वी कैन सी द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इज नॉट करेक्ट हियर. ओके, then we can write the numbering at the top of those words. Like number 1 पे ये वाला word आए, number 2 पे ये आए, number 3 पे ये आए. Getting? Then in the correction as per the numbering of the words the corrections can be done. Any of the method which is more convenient to us that can be carried on, either the numbering or this symbol. After that next symbol is SP, means spell. Anywhere if the spelling mistakes is there then we can underline that word. Specific word should be underlined and at the front of that sentence SP must be written. Got it? Then comes this symbol, means एक circle के बीच में space छोड़ा हुआ है, means close up. Where here we can see somewhat a word is there no need for a space between some and what. Okay, for that we will draw एक हाफ सर्कल ऊपर से, एक हाफ सर्कल नीचे से.
symbol like this will be drawn. It means no space required. It must be close up. Clear? After that, question mark in a circle, it means doubtful or query, और even जो manuscript में correction कर रहा है उसे भी doubt है, उसे भी clear नहीं है, तो that can be, that word or that sentence or that letter can be underlined. Okay, means we are saying to the publisher or the writer that make it clear, it's not clear what's the meaning or whatever it is. Clear? After that, again within the circle any symbol, or you can say only symbol is sufficient to change the font. Suppose within any particular font is not looking nice in your, for your publishing, in that case you can underline that word and in the starting you can write down within the circle font. Clear? Next is move to the left. Like here in the example we can see this I is starting from little right, but I want it to start from this left margin. Then this symbol can be used like move to left. दिख रहा है ये लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो दिस टाइप ऑफ सिंबल कैन बी क्रिएटेड. इन द सेम वे मूव टू राइट. सपोज मैं इस आई को इधर ना ले जाऊँ, इस एजुकेशन को इधर ले जाना चाहती हूँ, इन दैट केस मूव टू right. Like spreading, we want that it should start from the exact margin of I, then it must move to the right. For moving to right, this symbol is to be used. Got it? Then next is, हमें दिख रहा है ये lines क्या कह रही हैं, like from here to this, like एक U type की format बन रही है. This is move up. Here in the example we can see that from rest of the text, this particular text is at little bit bottom. दिख रहा है थोड़ा नीचे है, तो it means we don't want that it should look like this. We want that it should be at the same level like other text. For that we will use this move up, means नीचे से ऊपर सेट हो जाए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करेंगे. तो for that this symbol will be used. What we will do for this, we will strike that particular word, or we can underline also, and at the front we will draw this symbol, or we can write move up. Okay, say in ऐसे move up की तरह है. Here same case is move down. Here you can see this underline material is little bit at the upper level as compared to the rest of the text, है ना, बाकी text से थोड़ा सा ऊपर है, but we want this at the same level. So again like this we can underline or we can cross this complete word, and at the front of this sentence we can draw this symbol like move down, कि भाई इसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है. Got it? Next is straighten the left margin. Okay, ये कब होता है अब हमारे यहाँ, तो जो एग्जाम्पल दिख रहा है इसमें ऑलरेडी द लेफ्ट मार्जिन इज सेट. मीन्स इफ इन केस यहाँ पर द थोड़ा सा आगे होता या दैट पीछे होता थोड़ा सा, नॉलेज मीन्स ऑल दिस लाइन्स are not starting from extreme left. For that what we can do, we can draw this symbol, means एक straight line खींच दे. it means कि भाई सब एक साथ शुरू हो, सबका margin same level पर हो. Got it? तो this is for the left margin. लेकिन अगर left की जगह right margin हो तो क्या करें, like this, यहाँ पर all the lines are starting, कुछ पहले ख़त्म हो रही हैं, कुछ एंड में बाद में ख़त्म हो रही हैं, कुछ पहले कुछ बाद में, like that. But if we want that from right side also it must be justified, for that this symbol is there. In this what is there, what we can do for this, we can draw a line here, a arrow and a line, and at the front of this paragraph we can draw this symbol. It means at the right side it must be justified. जैसे ये लेफ्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में एक जगह से शुरू हो रहा है, इन द सेम वे इन द राइट इट विल बी. गॉट इट? देन कम्स विद इन अ सर्कल अ फुल स्टॉप. मीन्स इफ समवेयर full stop is missed while typing or while writing,
at the place wherever full stop is missing. At the place wherever full stop is missing, there you can put a slash or you can put a cross at that place, and at the front of that sentence you can draw this symbol. Means at the place of cross the full stop is to be inserted. Got it? Next is insert comma. Means कहीं पर हमारी टाइपिंग के बीच में comma needs to be inserted. So look here in the example given here, at these two places comma should be there. So for that we have put cross or put a slash at the same location where you want that comma, and at the front of these sentences we can put this symbol. Means एक slash से पहले जो symbol है that should be inserted. Got it? In same way, question mark, if somewhere question mark is to be inserted, interrogation sign is to be inserted, for that put a cross at that place and this symbol at the front of that sentence. Got it? In same pattern, insert hyphen. If somewhere hyphen needs to be inserted, then put a cross or put a slash, whatever is comfortable to you. Then at the front of that sentence put this symbol, between two slashes hyphen is there. Okay, it means at the place of this slash this hyphen is to be inserted. Here dash instead of hyphen अगर dash करना है तो same method. I think it's clear. Same for exclamation sign. जहाँ पर भी हमारा स्लैश लगा हुआ है देयर वी नीड्स टू इंसर्ट एक्सक्लेमेशन साइन. सिर्फ आपने क्या करना है, इन द सेंटेंसेस पुट अ स्लैश एंड एग्जैक्टली एट द फ्रंट ऑफ दैट सेंटेंस वी हैव टू ड्रॉ दिस सिंबल. मीन्स जहाँ पर भी स्लैश है वी हैव टू इंसर्ट दिस सिंबल, दिस एक्सक्लेमेशन साइन. देन semicolon, wherever the slash is there, if semicolon needs to be inserted, then at the front this symbol is to be put. Same way for colon, if somewhere in the typed material colon needs to be inserted, then this symbol. Got it? Same method for this apostrophe, inverted commas. ये तो सेम मेथड पिछले वाले की तरह ही है, जहाँ पर भी हमारा स्ट्राइक थ्रू किया है हमने या फिर यू कैन से स्लैश लगाए हैं. इफ़ इन फ्रंट ऑफ दैट सेंटेंस वी हैव पुट एनी ऑफ द सिंबल, तो जो सिंबल ये हमने सामने लिखे हैं दैट विल बी रिप्लेस्ड विद दिस स्लैश. ओके, ये नई चीज़ आई है. लुक हियर, ये हम जनरली अपनी नोटबुक्स में भी स्टूडेंट्स जब करते हैं वी कैन सी दैट बच्चे बहुत यूज़ करते हैं. सपोज 2 वर्ड्स मैंने लिख दिए हैं, उन 2 के बीच में कोई तीसरा वर्ड्स आना है ना तो हम एक इन्वर्टेड वी लगा देते हैं, है ना. तो दैट इज इंसर्ट. मीन्स सम ऑफ द मटेरियल अगर कुछ रह गया है लिखने के लिए बीच में, फॉर दैट इट इज स्पेशली यूज्ड. यू कैन सी हेयर नेक्स्ट मीटिंग ऑफ, यहाँ पर लुक, ऑफ द परचेज मीटिंग दिख रहा है. यहाँ पर भी हमने सिंबल लगाया, यहाँ पर भी हमने सिंबल लगाया. मीन्स जो ये सिंबल लगाया है दिस मैटर विल कम हेयर, दिख रहा है. और इफ समथिंग इज लेफ्ट, कुछ इसके नीचे लिख के ऊपर, जैसे हम नोटबुक्स में करेक्शन करते हैं. और इफ अगर फिलहाल तो मैं जो एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ, दिस डेट विल बी टेकन हेयर, इसलिए जहाँ ले जाना है वहाँ भी सिंबल लगाया है, जहाँ से लाना है वहाँ भी सिंबल लगाया है. बट इन केस a word which is not here, that will be inserted here. तो आप क्या करेंगे, ये सिंबल ड्रॉ करके ऊपर यहाँ पर वो वर्ड हैंड रिटन कर देंगे. दिस इज द वे हाउ यू डू इन योर नोटबुक्स. ओके, दैट्स डन. दीज ऑल आर द सिंबल्स which are to be used for manuscript. Okay, now the process or you can say the procedure for preparing a fair copy of the manuscript. अब पब्लिशर ने हमारे पास एक रफ स्क्रिप्ट भेज दी कि भाई अब फाइनल पब्लिशिंग के लिए वी आर सेंडिंग इट. इफ एनी करेक्शन इज देयर देन डू दैट. इट मीन्स हमारे हाथ में क्या है, वी आर हैविंग मैन्यूस्क्रिप्ट. ओके, फॉर टाइप राइटिंग अ फेयर कॉपी ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, उस मैन्यूस्क्रिप्ट को एक फेयर कॉपी फाइनल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है हमने. तो इट मीन्स सम करेक्शंस में भी देयर ऑब्वियसली. तो व्हाट शुड बी डन इन फॉर दैट फेयर कॉपी, what steps to be taken, that will
study now. The person should possess sound knowledge of the language in which the document has been written. It's the most important. Suppose your manuscript is in English language, then the person whosoever is doing the correction, he must be having a good knowledge of that particular knowledge, either Hindi or English. जिस चीज़ में आपका material है, the person should have a sound knowledge of that. Okay. He should be well acquainted with the various proof correction signs and their meaning and their uses also. अभी जो हमने proof correction के symbol सीखे हैं, the person must be aware that ये correction कैसे समझाऊँ publisher को, ये वाली correction कैसे समझाऊँ. If we know or the person know the correction symbols, then obviously it will be more easy to make that understand to the publisher. He should be well aware about the various rules of the display to be applied in different kinds of documents. Means in a magazine, how the format is to be followed. In a newspaper, is there any different format is there. In diaries, what format is to be followed. Means this kind of documentation, the person who is concerned with this finalization, he or she must be aware of all these. Okay, now these points we will discuss now, that must be kept in mind while typewriting the fair copy from the manuscript. Okay, एक manuscript हमारे हाथ में आ गई है, उसकी fair copy बना रहे हैं अब. What's to be done? Before starting to typewrite the document, it should be read once or twice. Means जो भी चीज़ हमारे हाथ में final copy करने के लिए आया है, we मस्ट रीड थॉरली दैट डॉक्यूमेंट. एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार होता है ना, एक बार पढ़ के वी आर नॉट दैट मच क्लियर. सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तो कोई ना कोई मिस्टेक दिख जाती है. थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो कुछ और नई चीज़ समझ में आती है कि इंस्टेड ऑफ दिस दिस वुड बी मच बेटर. तो फॉर दैट इट मस्ट बी रीड अगेन एंड अगेन. इन केस द डॉक्यूमेंट इज लेंथी, इट शुड बी रेड पैराग्राफ वाइज. सपोज कई बार बहुत लंबी चीज़ होती है तो वी गॉट बोर्ड वाइल रीडिंग दैट कॉन्टिन्यूसली, तो पैराग्राफ बाई पैराग्राफ या फिर 5-5, 6-6 लाइनें एक बार में पढ़ें. गो थ्रू दैम थॉरली टू मेक दैट अंडरस्टैंड. Okay, by reading the document once or twice, he becomes familiar with the style of the person who has written the document, and it becomes easy to typewrite a fair copy of manuscript. Obviously, suppose एक बच्चा है, उसकी writing not that good handwriting that is, but if the teacher goes through that handwriting once or twice, then he or she will be more able to understand the letter formation of that student. So reading the paragraph or reading that material becomes more easy for the person, right? The word which not clear in the manuscript should be encircled. Obviously हमने manuscript में ये सीखा है, wherever doubt is there, put a circle, right? He should proceed reading the material. जहाँ भी doubt हो circle लगाओ और आगे पढ़ना शुरू करो. It may be possible that this word is more clear in the following paragraph of the document. Sometimes it happens कि हमने जो ऊपर encircle किया है, that word or that sentence or that letter is repeated again in the further typewrite material, and from there we got to know that more clearly. In case after reading the whole document one is not able to understand any word, the sentence should be read time and again in order to find out the correct word which conveys the correct sense of the sentence. Sometimes it happens that any of the word is misconceptualized by us or maybe not understood by us. So in that case either we can change that word with a better word, or we can try to understand that through the full reading of the material. कई बार होता है ना, पूरा material पढ़ के we got to know that what is the meaning of that word. So it means the main thing is to go through the material twice, thrice, और जब तक हम we are not fully confident. Okay, during the course of typewriting from the manuscript, the spelling of words must be checked thoroughly. अगर problem है तो go use the dictionary also. If somewhere we have doubt or we are also not clear with the spellings, then take the help of dictionary also. The computer operator should run the spell check. जब पूरा document हो जाए आपका manuscript, then we must run, or the person who is handling the manuscript that must run the spell check. Like एक बार तो हमने खुद manually check कर ली, then through the computerized system the spell check or grammar check must be. No sentence should be typed by a mere guesswork. Means nowhere in your manuscript or any publishing material the guess
वर्ड्स, गेस सेंटेंसेस, गेसिंग शुड नॉट बी देयर। मीन्स कहीं पर भी 1% भी डाउट है तो एनसर्कल दैट और रिप्लेस दैट वर्ड। द ऑपरेटर शुड ओनली अप्लाई common sense while typewriting from manuscript, and glaring error should be avoided. Means somewhere it may happen that something is skipped from the person who is doing the manuscript. So in case of that, the typewriter or the person who is typing, the operator, that must use the common sense for some silly mistakes to avoid them. Okay, मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्रीविएशन शुड बी टाइप्ड इन फुल। हमने बीच में पढ़ा था इन फुल वॉज अ सिंबल, मीन्स फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी डॉक्टर, Dr. शुड नॉट बी टाइप्ड डॉक्टर। मीन्स जो शॉर्ट फॉर्म है वो शॉर्ट ही रहें, जो फुल फॉर्म है वो फुल ही रहें। गॉट इट? लाइक डॉक्टर को हम ऐसे ना लिख के, इट इज बेटर। ओके, मिस्टर should be written this, it should not be written like this. The whole document should be compared with the manuscript before giving the print command. The final document which is done after all the correction, that must be compared with the manuscript. अब manuscript क्या है? The typed matter or the handwritten matter in which all the corrections are done. So we have to match that either all the corrections are done in the final document or not. Then we go for print command. Here now it will be a revision also and a specimen that how to do a manuscript. In your exam it may happen that a paragraph is given and you are asked to do the manuscripts. So you must know, first of all, the language knowledge is to be there and the knowledge of symbols which are to be used for manuscripts. Let's see here, दो चार हम देखते हैं यहाँ पर. First one is here, you can see we have used stat. Stat क्या था? Let it be as it is. Like यहाँ पर मैंने correction कर दी, but later on it seems that no need for this correction. तो correction कर दी लेकिन sentence के सामने लिख दिया stat कि let it be as it is, means इस correction को consider नहीं करें. Now here what we want to do here, which a typist, means a must come after which. तो हमने क्या किया? Transpose याद है? Transpose हाफ सर्कल, जिस वर्ड को ले जाना है उसको हाफ सर्कल किया, देन इट इज टेकन टू द पोजिशन वेयर इट्स नीड्स टू बी शिफ्टेड. ओके, सिंबल बनाया और स्टार्टिंग में लिख दिया ट्रांसपोज. ओके, देन यहाँ पर फुल स्टॉप नीड्स टू बी इंसर्टेड, तो स्लैश लगाया और स्टार्टिंग में विद इन अ सर्कल फुल स्टॉप. ओके, जितनी भी करेक्शन एक सेंटेंस में, ऑल सिंबल्स शुड बी रिटन एट द फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. Okay, now here you can see work is not expected, so A is not required, so we have crossed this A and in the starting we have written the symbol D. D means delete. जो भी letter या word cross किया है that must be deleted. After that NP. NP, what was NP? New paragraph. Yes, here means जहाँ से भी cross लगाया है, from there a new paragraph is to be started. Got it? तो यहाँ मीन्स टेबुलेशन से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा. द सिंबल इज रिटर्न एट द फ्रंट ऑफ दैट लाइन सेंटेंस. आफ्टर दैट अगेन ट्रांसपोज. एक मेथड मैंने ट्रांसपोज का ये बताया था. नेक्स्ट मेथड यू कैन सी इजी वेरी बिकम्स. अगर ये जम्बर्ड वर्ड्स हो गए, सेट करेंगे तो क्या आएगा? बिकम्स वेरी इजी. तो ट्रांसपोज के थ्रू इसको बताना इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट. तो व्हाट वी कैन से, वी कैन डू नंबर द वर्ड्स. मीन्स सबसे पहले बिकम आए, देन वेरी, देन इजी. नंबर किया और स्टार्टिंग में मैंने सिंबल दे दिया ट्रांसपोज कि भाई इट्स ट्रांसपोज. ओके, अब देखिए हेयर कॉमा इज नॉट इंसर्टेड, तो वी हैव पुट अ स्लैश और यहाँ पर लिख दिया दैट इंसर्ट कॉमा. दिस इज द सिंबल फॉर इंसर्टिंग कॉमा. देन एक नई चीज़ देखें ज़रा, इफ़ एनी वर्ड इज मिसिंग, तो मैंने बताया था आइदर यू कैन यूज इन्वर्टेड वी, और यहाँ लिख के हमने एरो से दिखा दिया भाई एट दिस पोजीशन दिस वर्ड्स आर टू बी इंसर्टेड. ओके, अब देखिए रन ऑन पढ़ा था हमने, 3 टाइप का एक सिंबल था. मैंने कहा था इन एनी ऑफ द डायरेक्शन इट कैन बी ड्रॉन. तो ये देखिए रन ऑन का एक और तरीका कि भाई ये इसके बाद यहाँ से कंटिन्यूशन में आना था. नो न्यू पैराग्राफ इज रिक्वायर्ड. हमने एरो बनाया, सिंबल बनाया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ
continuation में जाए, and in the starting written run on, continuation में चलो. Okay, then here typist spelling mistake is there. Either we can circle this complete word, और हम क्या कर सकते हैं, जो ये wrong correct letter है इसको क्रॉस किया और इसकी जगह पे क्या रिप्लेस करना है वो लिख दिया PI. Okay, in the same way look here, easy, H की जगह Y आना है, इसको क्रॉस किया, here we will insert Y. अब देखिए यहाँ पर C must be in small letters, इसको क्रॉस किया, LC lower case. अरेंजमेंट स्पेसिस वर नॉट रिक्वायर्ड, तो क्लोजअप का सिंबल बनाया और स्टार्टिंग में क्लोजअप का सिंबल दिया. मीन्स जो फ्रंट में हम लिखते हैं ना, हो सकता है जो पर्सन टाइप कर रहा है उसे बीच के सिंबल्स ना दिखें, बट जब स्टार्टिंग में आप लिख देते हैं, मीन्स यहाँ लिखा है तो मैं जाके इस लाइन में आई विल सर्च इट आउट कि वेयर दिस सिंबल इज यूज्ड. ओके, तो इट्स अ कंपल्शन टू राइट एट द वेरी फ्रंट. गॉट इट? Then transpose again, we can see here. Then space required where the slash is, slash setting is, there is no space in between them, so we have put a slash and then space symbol. Here transpose का एक और method, whatever the text is there, encircle that and put a arrow till the location where it is to be shifted. Okay, one more example is there. देखो, go through the each of the specimen, they are showing the proper methods of manuscripts. Okay, all the symbols are there like this. Another, okay, देखो LC lower case, जिसको this is handwritten, that's why I am detailing it again. LC lower case, this B is capital but no need for the capital letter here, that's why I cross it and in the starting LC. Then transpose, done at should be there, तो that's why इसको हाफ सर्कल में लिया and the location. Okay, and in the starting trans. Close up, no space required between minutes, that's why close up symbol in the starting close up symbol is drawn. Then delete, this word is not required, then cross it and write D in the front. आफ्टर दैट पुट डाउन, याद है, मूव अप मूव डाउन, ये लिटिल बिट एट अपर लेवल है तो थोड़ा नीचे लेवल पे लाना है, तो वी हैव ड्रॉन द सिंबल. देन M कैपिटल लेटर नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स वाई क्रॉस इट, एंड LC लोअर केस. देन अगेन स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, वी हैव यूज्ड ट्रांसपोज. ओके, हेयर it's moving to right but no need for moving right, that's why this symbol is move left. दिख रहा है? Here we have drawn move left. This is run on, means no need for next paragraph. Got it? Here what is there? Space is required, that's why this symbol is given. Then minute book, M and B both needs to be written in capital letters, that's why this caps symbol is there. Okay, from here new paragraph needs to be done, so these two lines, याद है symbol NP or this, any of the symbol we can use. Then transpose, ट्रांसपोज के दो मेथड यूज किए हुए हैं, वन इज दिस रन ऑन एंड अनदर इज नंबरिंग, एनी मेथड वी कैन यूज. देन इंसर्टिंग कॉमा, हेयर, ये जो भी बंदा ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, दिस इज द वे ऑफ पुटिंग स्लैश. ओके, देन डिलीट, हमने नोट किया कि यहाँ भी डी ऐसे ही तरीके से बनाया हुआ है, हेयर ऑल्सो द डी इज रिटन इन द सेम मेथड. देन स्टार्ट, स्टार्ट इज लेट इट बी एज इट इज, स्टैंड इट एज इट इज, जैसा है वैसा रहने दो, मीन्स करेक्शन कर दी, बट लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि ऐसी करेक्शन, वी डोंट नीड दिस करेक्शन, दैट्स वाई स्टार्ट. आफ्टर दैट कैप्स, as it is the heading of this text, that's why it should be at the top and in the center also, it must be. And first of all run on kiya, that it must be at this location. After that caps, means all the letters must be written in capital letters. Then
CTR means what? Centralized, कि यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल बीच में टेक्स्ट आए. It must be at the center located. Then this text should be underlined. I think it's clear. One more sample is there. Go through all the specimen. After going through the specimens, the manuscript symbols and proof correction symbols, they'll be more clear to you. Okay, that's it for now. Good luck.